ईशानवी मेरा सेशन शुरू हो Hi. रहा है। Hi. Good morning, everyone. Today we are here for Facebook Live session for myths and facts of PCOS. और आज मेरे साथ में है डॉक्टर पारुल पटनी। वो यहाँ की काफी रिनाउंड डाइटिशियन है। बहुत लोगों ने उनसे काउंसलिंग ली है। शी हैज हेल्प अ लॉट ऑफ फीमेल struggling with PCOS and with the weight loss as journal also with patients who have been diabetic and who have respiratory issues. So today specifically हम पारुल से पूछेंगे कि what kind of a diet a PCOS patient needs and what exactly is the problem with PCOS क्योंकि I've seen many patients in my gynae practice also that they have a tendency of weight gain and weight loss बहुत difficult है with PCOS और वो हो भी जाता है then they gain fast. So they keep on asking me कि हमारे हार्मोन में कोई गड़बड़ है इसकी वजह से है. Yes, definitely there is a hormonal issue with it, but then I think she will tell you better कि what kind of a lifestyle change you need because it is. I always tell my patient PCOS is not a disease, it is a lifestyle disorder. आपको ये समझना है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि वो आपको एक लाइफस्टाइल आपको अपनी थ्रू आउट लाइफ के लिए चेंज करना है. इट कैन नॉट बी लाइक कि भाई अब मुझे कंसीव करना है तो मैं जरा लूज कर लूँ उसके बाद मैं फटाफट गेन कर लूँ बिकॉज यू आर नॉट ओनली प्रोन फॉर पीसीओएस इन वेज लाइक दैट यू आर प्रोन फॉर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो इसके साथ में डायबिटीज है जो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं. तो विद एज पीसीओएस जो है हर एक एज ग्रुप में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज पीसीओएस आई विल टेल यू दैट एंड उसके बाद में पारुल आपको बताते हैं आगे क्या क्या है. तो पीसीओएस जो है इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. पहले ये बोलते थे फिर पीसीओडी पे हो गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. जो पहले डिजीज था उसको सिंड्रोम कर दिया उन्होंने. और अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिर्फ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में पीसीओ भी मेंशन होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को यूजुअली पेशेंट्स जो आते हैं फर्स्ट टाइम जब उनको पीसीओ पता चलता है पीसीओएस है वो तब होता है जब उनके साइकिल्स डिलेड होने शुरू हो जाते हैं या इरेगुलर साइकिल्स होते हैं या एकदम वेट गेन हो गया साइकिल्स नहीं आ रहे या बहुत हैवी साइकिल्स हो. So yes, this is one of the symptoms of PCOS, menstrual irregularities, which is quite common from adolescent age group से शुरू हो जाती है. और वो धीरे धीरे क्योंकि वेट पुट ऑन की टेंडेंसी ज्यादा है आजकल बिकॉज ऑफ दिस कोविड गोइंग ऑन people are more into a sedentary lifestyle. So I have started seeing more patients of PCOD in my clinics. And then I would again say, even if your ultrasound is suggestive of PCO picture, but you have maintained a healthy lifestyle, a well balanced diet, exercise schedule, and your periods are regular, then you need not to worry about कि मेरा ultrasound पे अभी भी PCOD है, वो cyst कैसे जाएंगी. Just forget about it. It's an ultrasound finding which has been diagnosed. You are just prone for weight gain again, and you can go off balance easily with your weight So, Dr. management. Bachchan, is it true that early finding will really help people to manage PCOD? Like, for example, at the time of menarche, when young girls are getting maybe extra hair growth, thicker hair growth, should they go for ultrasounds and all? See, you have mentioned a very good point. So the second thing जो है that is androgen abnormalities जिसमें आपके ये hirsutism आ जाता है, acne आ जाता है, even Hmm. male pattern का hair loss भी आने लग जाता है. Yeah. That is Hmm. also something they keep on asking कि ये है, ये आपके हार्मोन से रिलेटेड है. So definitely उन stages में obviously we don't want to start any medications for them at an early stage, but अगर वो उसी टाइम पे अपना थोड़ा सा डाइट और वेट को मैनेज कर लेंगी तो डेफिनेटली उनके हार्मोन्स बेटर वर्क करेंगे. सो व्हाट So एग्जैक्टली. idea is that they must seek consultation from a professional gynecologist, get it sort of diagnosed, and then start with their lifestyle change first. Just say, या for example, they're watching Netflix till late night, then attending classes early morning, sleeping during the day. Is that also one of the reason why more young girls are getting it? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पीसीओडी ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको कोई दवाई दे दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा. नो, इट विल नॉट गेट क्योर्ड. इट हैज टू बी अ वेल बैलेंस्ड अप्रोच इन द ट्रीटमेंट ऑल्सो. मतलब आपको उस ट्रीटमेंट के अंदर आपको अपने डॉक्टर से काउंसलिंग तो चाहिए ही चाहिए. आपको एक वेट काउंसलिंग चाहिए. आपको वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट की प्रॉपर चाहिए. एक्सरसाइज शेड्यूल चाहिए.
So you need to know what are healthy substitutes of even if, because क्या है कि ये जो generation अभी we are talking about adolescent or the teenage generation, उनको you cannot actually उनके पेरेंट्स कोशिश करके भी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि you cannot actually mold them and they are not able to see कि हमें आगे क्या advantage है. They feel अभी इतना है Can हमें क्यों हो रहा है. So I would the also like to know that, like you've talked about physical symptoms, hirsutism, hair loss, acne, irregular periods. Are there more, long-term health issues that these girls can have, say when they see, are in their 30s or 20s? सो द गोल्डन रूल ऑफ पीसीओएस कहीं से भी कभी से भी शुरू हो जाओ, जब से आया है पीसीओएस इज वेट मैनेजमेंट. आपका वेट रिडक्शन होगा तो आपके हॉर्मोन्स प्रॉपरली वर्क करना शुरू होंगे. सो द बेसिक बायोकेमिकल मैकेनिज्म में जहां पर होता है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका एग है, जैसे नॉर्मली एक ओवुलेशन साइकिल में एक एग बना मोनोफॉलिकुलर, उसने हार्मोन पहले ब्रेन से एक हार्मोन आया कि वो एग बन जाए, उससे वापस नेगेटिव फीडबैक जाता है कि हाँ इतने साइज का बन गया, अब और हार्मोन नहीं दो ये वाला, और अब Hmm. रिलीज हो जाएगा. दैट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म. इन पीसीओएस क्या होता है कि वो एक की जगह ना 10 छोटे छोटे बन जाते हैं. तो वो जो Oh. 10 छोटे छोटे बने हैं ना, दे आर नॉट इवन मेच्योर इनफ कि वो अभी उनको और चाहिए हार्मोन ग्रो होने के लिए, एफएसएच जो मेन हार्मोन है. बट अब सिंपल लॉजिक है. एक है जिसको हम सपोज करते हैं कि एक चीज को 100 तक जाना है, वो 100 तक जब वो 1 फॉलिकल गया तो उसने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे और नहीं चाहिए. अब वो 10 फॉलिकल्स हैं, वो 10 लेवल के हैं, बट द ब्रेन इज गेटिंग अ सिग्नल ऑफ 100. तो ब्रेन विल स्टॉप मेकिंग एन एफर्ट, वो हॉर्मोन्स वहीं पे रह गए. अब अगर एग ही नहीं बना तो पीरियड्स कैसे आएंगे, ओवुलेशन नहीं होगी. तो एक आपका मेन ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो दो दो Hmm. महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, और जब भी आ रहे हैं तो एकदम बहुत हैवी फ्लो के साथ आ रहे हैं. That's because your second hormone, which is supposed to come after ovulation, progesterone, is not there. It is Hmm. either very less or it is not there. क्यों? क्योंकि So वो जो one more. हाँ Hmm. हाँ One more हाँ question, with a very interesting fact, and very beautifully you've explained that how these small follicles are creating sort of a havoc inside the body. Where one had to be produced, tens are getting released, and they are again and again putting you off the cycle. yeah. But since you said that it's the overweight, now there are a lot of cases of thin girls having PCOS. Can you just explain about that? Why are thin people getting I it? was actually wondering कि this is something I have to tell you because you get patients who have thin PCOD. Thin PCOD Yeah. patients में it's not necessarily कि उनका एग जो है फैट सेल से अफेक्ट हो रहा हो. पीसीओडी जो ओबीस वाले होंगे दे विल बी इजियर टू मैनेज विद वेट रिडक्शन, क्योंकि उनके Oh. अंदर जो फैट सेल्स हैं वो जो बाहर फैट सेल्स है ना उसमें वो हार्मोन बिकॉज जब वो नहीं हो रहा तो वो जो एंड्रोजन जो हम कर रहे हैं वो फैट सेल जो है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ईस्ट्रोजन्स में. अब ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में एक्सेस हो गया. अब आपकी बॉडी में अगर एक्सेस ईस्ट्रोजन है तो वो जैसे आपने देखा होगा 30-40 ईयर्स की फीमेल्स को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज इट क्रिएट्स काफी थिक लेयर. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कर सकता है, दे आर प्रोन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर ऑल्सो बिकॉज वो चेंजेस ऐसे होने शुरू हो गए हैं. सो Mhm. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि पीसीओएस सिर्फ अभी के लिए नहीं चाहिए कि हाँ अच्छा ठीक है अब तो बच्चे हो गए, हमारे को तब पीसीओडी की प्रॉब्लम थी अब तो हम ठीक है. दैट इज द बिगेस्ट मिथ आई हैव सीन. दे फील के अरे अब हमारा वेट गेन अच्छा क्यों, हमें क्यों अब शुगर की दवाई शुरू कर दी है आपने. people have to understand the medicine which we usually give for PCOD definitely is an insulin sensitizer because ये इंसुलिन रेजिस्टेंट डिजीज है. तो जो आप अभी मुझे थिन पीसीओएस बोल रहे हो ना, थिन पीसीओएस वालों में यूजुअली हाइपर इंसुलिनीमिया होता है. इंसुलिन हाँ. लेवल्स हाइपर चल रहे हैं तो जिसकी वजह से वो उनके पीसीओडी के एग्स की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है. So, meaning thereby that people who have these irregularities and have been diagnosed with PCOD must do three things at one go: diet, exercise, and medicine, so that they regularize their hormone, body weight, and everything. And then, do you think that they can taper off, the medicine part and just continue with their lifestyle change? Will that be the solution? डेफिनेटली वट एवर मेडिसिन वी आर गिविंग यूजली अगर किसी के साइकिल्स इरेगुलर होते हैं इवन इफ वी गिव देम ओसी पिल्स. ओसी पिल्स भी वो वाली आती हैं जो कि बिकॉज जैसे आपने अभी बोला हिरसिटिज्म और इसके लिए इट हैज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो आपका
इसकी जो हेयर की क्वालिटी है, फेशियल हेयर, उसकी क्वालिटी भी थिन करता है, आपके एक्ने भी ठीक करता है. सो Okay. यूजुअली पीपल कीप ऑन आस्किंग अस कि भाई हमें आपने ये तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल दिया, हमें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं करने थे. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर दवाई का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है. उसी तरह से Right. कोई मेटफॉर्मिन जो है वो सिर्फ डायबिटिक के लिए नहीं है. वो आपका Hmm. इंसुलिन का कम करेगी तो आपका जल्दी वेट लॉस होगा, जो आपका वेट का चल रहा है. सो दे हैव Another टू. question here, there are a lot of young girls who are being prescribed OC pills. So, what is the age, the right age to start with this kind of medication? Because people are very, they sort of feel, oh God, doctor ने तो अभी से OCPs पे डाल दिया इतने छोटे बच्चे को. So, if you can just put a bit of light on this kind of a. या एक्चुअली क्या है कि एज ऑफ मिनार्की जो है ना, मिनार्की यानी जब इनको फर्स्ट पीरियड्स आए वो काफी ज्यादा नीचे आ गई है. सो इट इज लाइक Right. अब पहले 13 ईयर्स होती थी, अब 11 साल हो गई है. तो एनी हाउ अगर 11 साल का बच्चा जो है जिसके पीरियड्स शुरू हुए और 2 या 3 साल तक में, वी एक्चुअली शुड सी फॉर 2 to 3 ईयर्स कि उसके साइकिल्स हो सकता है कि बीच में इरेगुलर हो रहे हो, बीच में हेवी फ्लो हो रहे हैं. ऑब्वियसली शी डजंट नीड ओसी पिल्स बिकॉज वो उसकी अभी प्रॉपरली शुरू ही नहीं हुए. बट आफ्टर 3-4 ईयर्स, सो अब किसी के 10 साल पे शुरू हुए हैं, किसी के 13 साल पे शुरू हुए हैं, सो यू कैन नॉट एक्चुअली फिक्स. और उसका वेट गेन हो रहा है. तो इफ Right. वी गिव एन इंटरम पीरियड के लिए अगर उसको 3 या 4 साइकिल्स दें, पर मेक श्योर एट दैट टाइम दैट शी इज ट्राइंग टू लूज वेट, सो ताकि Exactly. उसका, हाँ, उसका एक साइकिल रेगुलराइज हो जाए और उसका वेट लॉस हो जाए, फिर उसको बंद कर दो. Hmm. So, द प्रॉब्लम. I always wanted to know from an expert that, these sleep cycles that people are having now, they are working in dungeon shifts, they are, sleeping till late. Like yesterday only, I had a client, she said, my mother sleeps at 3 o'clock. How do you expect me to sleep at 11? So, this kind of erratic sleep cycle, does that have an impact or it is just a myth? Definitely, definitely. Your hormones are work at a circadian rhythm, and you are actually screwing it up with ये जो it's not only the binge eating which is affecting. When I say it's a lifestyle disorder, it is a lifestyle disorder. You have to change your lifestyle. उसमें सब Exactly. कुछ आएगा, आपका स्लीप पैटर्न भी आएगा, आपका डाइट भी आएगा. आई एम नॉट अगेंस्ट मैगी और पास्ता. सो आई ऑलवेज टेल कि अगर पास्ता खाना है तो होल व्हीट पास्ता खा लो, and then do the extra effort. Baki, you are the best judge. You can You know tell me कि what? क्या I करना है. I I, I will speak now on this. So you know what happens? As much as I understand the behavior, it is all about the behavior. Now, if I say that you can have wheat pasta, it goes up to wheat pizza, it goes up to wheat burger, it goes up to everything which is whole wheat available in the market. Now, the second catch here is that you are saying, okay, you can have whole wheat pasta. Now, how much cheese is going into it? How much those sauces that are, coming in those packed containers going into it? Then the time. If I ask them to have their dinner at 7:38, they're like, we sleep at 1. How can we have our dinner at 8? Now, if you are having a lunch at 2 and your dinner at 10 o'clock, it is very, very well obvious that you will have a bigger quantity of whatever you are having. Then another point of discussion here is that the family gets together on a dinner table. So jab tak father or brother or husband is not coming, I will not have my food. So they're having it at 10:30. Now they are comparing themselves with males, which is like there's you cannot compare apples to bananas. So उनका तो वेट नहीं पुट ऑन होता, वो तो मुझसे भी ज्यादा खाते हैं, दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन. सो हियर द मैसेज इज दैट डियर, इट इज योर बॉडी, you are having problems. Now you have to sort it out. You cannot compare with other family members. They have maybe a better metabolic rate, they do not go through these up and down hormonal cycles. If it is your body, you have to see. So my advice to the listeners is that please uh, eat on time. Try to eat ghar ka khana. Try not to have pizza, pasta, dal chawal towards the end of the day. You have it towards the first half, maybe before 4 p.m. or 5 p.m. Try to eat on time, and exercise is the key.
Now, with exercise, there's another point that you have to take care is that you're active during the day. इट शुड नॉट बी कि मुझे पानी टेबल पे दे दो, डोरबेल आंसर कर दो, मेरा फोन पकड़ा दो, चार्जर पकड़ा दो, 1 घंटा लेकिन मैं जिम में काम करती हूँ एंड आई एम एक्सरसाइजिंग, आई हैव अ पर्सनल ट्रेनर. दैट डजंट वर्क. You Yeah. have to move, right? So these are few things that people really should take care of while they are taking medicines, because what they do is, as you said correctly, they will go to the doctor, take 3 to 4 cycles of OCPs, and they say हमारा तो ठीक ही नहीं हुआ PCOD, वो तो अभी भी वैसा का वैसा है, because they expect a magic to happen with the pills, which does not happen. It is your hard work. Now, another question that I really want to know is how much PCOD affects fertility? Similarly, जैसे I was telling you anovulation, तो एक्सक्यूज मी, सो एनोवुलेशन का इफेक्टिव वही है इनफर्टिलिटी में. आपका एग का साइकिल ही अगर रेगुलर नहीं है तो ऑब्वियसली एग की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. और एग अगर आप सोचो, जैसे इन अ हेल्दी फीमेल 12 मंथ्स में 12 टाइम्स द पेशेंट इज ओवुलेटिंग, एटलीस्ट 12 तो कर ही रहा है, कई बार 2 बार भी एग्स बन जाते हैं किसी साइकिल में, बट 12 टाइम्स तो कर रहा है. बट इन अ पीसीओएस पेशेंट जिसको 2 या 3 महीने में आ रहे हैं, वो तो ये 3 या 4 बार ही कर रहा है एग, तो उसकी फर्टिलिटी तो Right, पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो गई. तो right, right. बट गुड थिंग विद पीसीओएस पेशेंट्स इज दैट अगर उनको विद डाइट एंड एक्सरसाइज वो अपना थोड़ा वेट लॉस करें एंड उनका प्रॉपर ओवुलेशन इंडक्शन किया जाए विद मॉनिटरिंग एंड दे स्टार्ट मेकिंग, तो दे कंसीव फास्ट, दे कंसीव फास्ट. तो ये जो मिथ है ना कि नहीं नहीं पीसीओएस है इसलिए ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है कि एक तो वो अपना थोड़ा वेट को मेंटेन करे, वेट घटाए, Mm-hmm. और आप डॉक्टर को जाके मिलो ताकि वो आपको मेडिसिन दे जिससे आप कर पाओ कंसीव. सो हम ये सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी में, बिकॉज देर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी जिसमें एंडोमेट्रोसिस भी है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. दिस इज वन फैक्टर विच वी फील पीसीओएस इज इजी टू ट्रीट, दो बहुत कॉशियसली हमें मेडिसिन देनी होती है, बिकॉज क्या होता है कि इनके अंदर ना हाइपर रिस्पॉन्स भी आता है. सो यू नीड टू बी Oh, थोड़ा सा कॉशियस विद द मेडिसिन. यू कैन नॉट बी लाइक जिसको आप सबको एक तरह के मेडिसिन दे दो, उनको आपको थोड़ा लो डोज से शुरू करके देखना पड़ता है, क्योंकि वो लो डोज पे भी बहुत हाइपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बिकॉज उनकी ओवरीज जो है ना वो दे आर नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड, तो वो थोड़ी इम्बैलेंस्ड रिस्पॉन्स पे रहती हैं. बट there's देन another point that I would like to add here, or in fact ask you here, that how often should they follow up with the doctor? Because follow up is not that good. As much as I have seen in the patients that I see, they would just forget about it and they'll stop the medicine on their own. रेगुलर नहीं हुए पीरियड्स, तो अब क्या करना है जाके डॉक्टर के पास, ये तो ऐसे ही चलेगा. आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि आपको सेकेंड थर्ड डे आना है. सो वो मुझे कई बार ही पूछते हैं आपने मेडिसिन तो सेम देनी है फिर हम क्यों आए. मैं कहा क्योंकि मुझे आपको वेइंग मशीन पे खड़ा करना है. सो वो एक फैक्टर है कि बिकॉज क्या होता है कि दे ऑल्सो नो कि वो खड़ा करेंगी वेइंग मशीन पे, तो आप कुछ तो कोशिश करो. प्रेशर. क्या होता है जो 3 या 4 महीने की दवाई लेके जाते हैं फिर दे जस्ट गो. एंड आई ऑलवेज टेल देम, जब भी वो आते हैं जिन पे लग रहा होता है कि हाँ हम बहुत बार मेडिसिन लेके, मैं उनको वहीं पे बोल देती हूँ कि देखो अभी यू आर मोटिवेटेड है ना, जॉइन अ जिम, गो टू अ डाइटिशियन, और अभी ना तीनों चीजें इकट्ठी कर लो शुरू, बिकॉज क्या है कि अभी उस पर फर्क दिखने लग जाएगा. अदरवाइज आफ्टर 2-3 मंथ्स यू फील मुझे तो कुछ फर्क लग नहीं रहा, कोई फर्क तो है नहीं, एंड देन यू जस्ट लीव. देन अनदर Hmm. 6 महीने निकालोगे फिर कहीं और डॉक्टर के पास पहुंचोगे. सो इट Exactly, इज exactly. एग्जैक्टली. So there So is a question from Aparna. Why weight imbalance and hair growth increases in case of PCOS? अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड, अभी अपना यही सारा कि क्यों होगा, बिकॉज आपका जो मेल हार्मोन है ना वो ज्यादा हो रहा है, आपका जो फीमेल हार्मोन है वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, आपके एंड्रोजन ज्यादा बन रहे हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम करा रहे हैं. और वो मेल पैटर्न में ही इसलिए लोगों की जैसे वो सिर के बाल उनके झड़ रहे होते हैं और फेशियल हेयर ज्यादा हो रहे होते हैं, बॉडी में और भी जगह पे हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है. एक्ने भी इट्स अ फॉर्म ऑफ के वो हार्मोन ज्यादा है. तो ये कई कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता. दो डेफिनेटली पीसीओएस के पेशेंट को ये डायग्नोज करना कि ये हार्मोनल जो हेयर ग्रोथ और ये उसको एक्ने है ये पीसीओएस की वजह से है, उससे पहले हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं टू रूल आउट सम कोई और एड्रीनल ट्यूमर या कुछ और तो रीजन नहीं है. बट यूजुअली दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन.
which we एंड see. इंसुलिन सेंसिटिविटी जो कम हो गई होती है, दैट ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ फैट deposition in the body. So in a way, it's working against you, and you put on more and more weight day by day, बढ़ता चला जाता है वजन. तो इसके लिए जैसे हमने बात करी थी कि मेटफॉर्मिन इज स्पेसिफिकली गिवन सो दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, और आप जब एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, तो वो आपको रिजल्ट्स दें. सो इंसुलिन बेसिकली जो हार्मोन है ना, इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन. मतलब वो ऐसा नहीं है कि जो आपकी बॉडी में से फटाफट फैट वगैरह किसी को डिसॉल्व करेगा. वो आपका बिल्डिंग कराएगा. उसका मेन फंक्शन ही है. क्योंकि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज आपका ग्लूकोज लेवल कम हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया. तो जैसे ही आपका शुगर लो होता है तो आपकी बॉडी से इंसुलिन निकलती है पैनक्रियास से, ताकि फटाफट ग्लूकोज और कराओ. और वो उसको बनाने के चक्कर में, अब जिस पेशेंट में ग्लूकोज कम नहीं है बट उसकी बॉडी जो है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट है, तो आपकी जी. बॉडी इंसुलिन बना ज्यादा रही है, आपको जरूरत नहीं है उतने इंसुलिन की. बट वो कहाँ जाएगा? वो तो सब आपका बना के, सब आपका वेट गेन आपको तो प्रॉपर ऐसा तैयार कर रहा है वो. और दैट इज नॉट ओनली हेयर ओनली. जो ये पेशेंट्स होते हैं पीसीओएस वाले, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी प्रोन फॉर डायबिटीज होते हैं, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज करते हैं. और उस टाइम भी वी हैव पेशेंट जो बोलते हैं कि अरे इतनी शुगर तो ठीक है, मैंने तो थोड़ी सी खाई थी. यू डोंट रियलाइज कि जो थोड़ी बहुत आप चोरियां कर रहे हो ना, वो आपका इंसुलिन लेवल को फ्लक्चुएट करा रहा है. और फिर वो बेबी का वेट बहुत गेन कराएगा. एंड देन इन द एंड बेबी का वेट इंक्रीज हो रहा है, उसकी लंग मेच्योरिटी नहीं प्रॉपरली हो रही है. सो वो विल बिकम अ डिफिकल्ट डिलीवरी के टाइम पे. 4-4 किलो का बच्चा, शोल्डर डिस्टोसिया, सो मेनी प्रॉब्लम्स. और जैसे ही, बिकॉज उसकी बॉडी में ग्लूकोज तो जा रहा है और उसको तो इंसुलिन ज्यादा बनाने की आदत होगी, बिकॉज आपने हाई ग्लूकोज दे दिया. वो जैसे ही बेबी बाहर आता है उसका शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है, बिकॉज उसकी तो इंसुलिन ज्यादा चल रही थी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये सोच लो कि भाई पीसीओएस पे अब मेरा तो हो गया प्रेगनेंसी, ये तो शुगर कह रही है मुझे डॉक्टर, पर डॉक्टर को क्या पता चल रहा है अगर मैं 2 पिन्नी खा भी लूं. अब आई हैव And सीन also, are they एक पिन्नी खा लूं. so बोला क्या मैं एक पिन्नी में another कितनी question? शुगर? नो. So सो later in the life, the mother and child both are susceptible to having diabetes. Is that true? यस, डेफिनेटली. एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपना थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे और आप अपना डायबिटिक का रिस्क फैक्टर जो है उसको अगर क्रॉस कर जाते हैं विद योर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एवरीथिंग, आप अपना ही नहीं अपनी नेक्स्ट जनरेशन का भी बहुत भला कर रहे हैं और उससे नेक्स्ट का भी कर रहे हैं. बिकॉज वंस वी टेक अ फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री में हम पेशेंट की सिर्फ उसकी पेरेंट्स नहीं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी पूछते हैं कि डायबिटिक तो नहीं है. So obviously, it's not only your generation which is going to be affected by your decisions. It is generation to generation which is going to Exactly. be. That is something they must understand. There was a very nice question. Is it a possibility of having twins? Joginder had asked, does PCOD increase chances of twins? Is that so? या डेफिनेटली, बिकॉज वही हाइपर ओवुलेट कर जाते हैं विद मेडिसिन, तो उनके अंदर ट्विंस भी एंड मल्टीपल जेस्टेशन होने के चांसेस होते हैं. इट्स नॉट ओनली कि आईवीएफ के ही थ्रू उनके ज्यादा ट्विंस या ट्रिपलेट्स के चांसेस हो, इन नॉर्मल ओवुलेशन इंडक्शन भी उनके एग्स जल्दी रिस्पॉन्स करके ज्यादा बना सकते हैं एग्स, और डेफिनेटली फर्टिलिटी इंप्रूव रहेगी उसमें. तभी मैंने बोला ना कि पीसीओएस को आपको बहुत कॉशियसली ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट वांट देम कि वो बहुत सारे एग्स बना के एकदम उनकी बॉडी पे भी ज्यादा स्ट्रेन आ जाए. अब मुझे आपसे एक जो पूछना है वो आप मुझे बताओ पारुल कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सीड साइकिल, और ये सीड्स का क्या कोरिलेशन है विद पीसीओएस, बिकॉज बड़ा ही पीपल कीप. मजेदार कॉन्सेप्ट अभी आया है. बेसिकली जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन इम्बैलेंसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच द साइकिल्स आर एबनॉर्मल, एंड ड्यूरिंग द मंथली साइकिल द रेशियो ऑफ progesterone estrogens are getting changed, because of which the lining is shed. So the concept says that when you start with your period, you take a teaspoon of flaxseed and a teaspoon of pumpkin seed all ओके. through the first 15 days from the time you start your cycle. अच्छा. So, in a way, till the time you are ovulating. Now, from the 16th day of the cycle, you start having a teaspoon of till sesame seed and a teaspoon of sunflower seed. So, along with all these changes, if a woman is also taking, say, phytoestrogens in a particular cycle, it will help
to regulate the cycle better. So, and there have been Definitely. wonderful results. There's not too much a study which supports, but as a dietitian, I feel that there's no harm in following this cycle. अच्छा, There's no so harm. या डेफिनेटली सो बाय द एंड वो 4 टेबल स्पून पे आ जाएगी, मतलब No, 4 no, टीस्पून है ना, वो वाले no, बंद no. कर देंगे वो पंपकिन सीड वाले का। बंद करके, yeah, start with 2 teaspoons, one of till, sesame, and one sunflower, सूरजमुखी के बीज जो होते हैं. ठीक है। Just roast them and keep them, and maybe with your fruit, mid morning fruit, or around evening, 4 o'clock when you're little hungry, but you're still waiting for that sham ki chai, you can have those seeds. There are a ओके। lot of people who put seeds on their salads or maybe in the flour and all that. That's also fine, but I really feel that taking them separately will help to absorb the nutrients better. ओके। And definitely, as much as the studies support, having a lot of junk food has a very, very negative effect on PCOD. And if someone is really into junk food, they must try and have it before 5 p.m., as we already discussed. Try to have it once in 10 days. Never have self pity. या ये बड़ा मोड होता है कि हाय मुझे मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, और आई एम द वन हु हैज टू एक्सरसाइज आल्सो, और मैं तो खा नहीं सकती कुछ भी, मैं क्या, पानी भी लग जाता है हम लोगों को एंड ऑल दैट. ऐसा कुछ नहीं है. सी यू हैड योर गुड डेज एंड नाउ यू वर्किंग हार्ड फॉर द बेटर डेज. आपने बहुत कुछ खाया पिया जिसकी वजह से आज वेट बढ़ गया है और पीसीओडी इंक्रीज हुआ है, तो डोंट गेट इनटू दैट सेल्फ पिटी मोड. और घर का खाना बड़ा बोरिंग लगता है ज्यादातर लोगों को. घर का खाना तो बहुत बोरिंग होता है बिकॉज अब ऑर्डरिंग इन इज सो इजी. सैलेड्स भी होंगे तो इतने पकवान टाइप के सैलेड्स होते हैं, सो मेनी सॉसेस, एंड लिटरली देयर इज अ लेयर ऑफ सॉस व्हेन यू फिनिश द सैलेड. दो सैलेड्स आर नॉट द रियल सैलेड. सो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक सिंपल घर का खाना और बेसिक एक्सरसाइज एंड बेसिक मेडिसिन, दैट्स द सोल्यूशन. आई थिंक यू समड अप नाइसली। मेरे हिसाब से मैं आई वाज अबाउट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट फूड्स जो कि शुड नॉट ईट इन पीसीओएस, बट आई थिंक तुमने बेसिकली तो कवर कर दिया, बट एज अ स्टिल। लेमैन ना, बड़ा प्रॉब्लम है. जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दो टाइप के फूड होते हैं. जो आपके शेल्फ फूड होते हैं, यानी कि अगर रोटी बना के रख दूं तो कल तक वो खराब हो जाएगी और परसों तक उसमें फंगस लग जाएगा, राइट. उतनी शेल्फ लाइफ के जो फूड हैं वो आपके ग्रीन जोन में आने चाहिए, यानी कि मैं उन्हें ले सकती हूँ रेगुलरली, राइट. बाकी जो है वो रेड जोन में आने चाहिए. अब जैसे आप बोल रहे हो कि पिन्नी, गाजर का हलवा, गज्जक, सॉसेस, बिस्किट्स, इनको तो कुछ मानते ही नहीं. दे आर हेल्दी, they are not even counted, right. There's no accountability. If I ask you मतलब आपने क्या जंक फूड खाया, you'll never say कि मैंने 2 पिन्नी खा ली थी उठा के, आधा आधा करके टुकड़ा चलते फिरते खाते रहता है हर कोई. या फिर मैंने चलो 2 बिस्किट सुबह की शाम के चाय के साथ लिया और 2 शाम की चाय के साथ लिया. There's no accountability. Till the time you do not put them in the red zone, you will never even think what you're having. There's another very good concept that people who would really like to lose weight should maintain is a food diary. End of the day, just the way you check your Insta and Facebook notifications, just write what you've had. एक बार देखो तो सही. You will automatically know कि हाँ यहाँ 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 I'm going wrong. It will really help you to achieve the target. Now, another very big thing that people, do not consider is how much weight loss. सबको लगता है 1 महीने में 8 किलो तो होना ही चाहिए, उससे कम तो क्या वेट लॉस है, विच इज सच ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट. बिकॉज अगर आप 1 महीने में 8 किलो वजन कम कर रहे हो, आप ये सोचो कि न्यूट्रिशन के नाम पे आप खा क्या रहे हो. वी ऑलवेज टॉक अबाउट हेल्दी हेल्दी हेल्दी, राइट. हेल्दी ये खाना चाहिए, हेल्दी वो खाना चाहिए, और ज्यादातर लोग सिर्फ कैलोरीज के बारे में सोचते हैं. इवन इफ इट इज अ चपाती, दे विल थिंक कि ओहो चपाती क्यों दे रहे हैं, चपाती में कैलोरीज होती हैं. लेकिन आप ये भी तो देखो कि चपाती से न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपका गट क्लियर हो रहा है,
आपके स्टूल्स को बल्क मिल रहा है, वो सब तो कोई देखता ही नहीं है. So low fiber diet is another problem. Too much of weight loss will again put you into hormonal imbalance. It will lead to a lot of hair loss because of undernutrition. It is not just tick in the box कि 8 किलो कर लिया, I'm a winner, give me a shield. ऐसा नहीं होने वाला. So the right amount of weight loss should be 2 to 3 kgs per month. वो आपकी मेहनत से होना चाहिए, क्रैश डाइट से नहीं होना चाहिए, right? And there are a lot of other things that people follow: keto, intermittent, very high protein diets, and all that stuff. My suggestion is, even if you want to do them, do it for a month or two, so that maybe you're able to reduce insulin, insensitivity, right? And it helps you, sort of get into that mode of weight loss. But post that, once you've lost 5 6 kgs and you are, much in control, you must go on to a moderate eating pattern and good amount of exercise and activity through the day. This inner you know what should I say, that urge to eat will die within 15-20 days of following a clean eating pattern. Mind my words, 15 days of control, and even if I give you samosa or pasta to eat, it won't taste the same because the neuroreceptors have reduced. They will give you the same amount of taste and pleasure with 2 bites rather than having 2 samosas. Just an example, right? So, this is something that people must understand. Moderation is the key. You cannot go all your way and do very strict dieting, it will ruin your body. Exactly. Very true. So this is the last question. This is from Ruchi, and she has written. She wants to know: is there any difference in taking soaked seeds versus normal seeds? Mostly, you can lightly roast them and have them. You don't need to soak them. Until and unless you have a lot of body heat, wherein you might have nosebleed, acne, small pimples coming on your face, or you might feel that they're constipating you, because there are body types wherein seeds would constipate. In those cases, you can try and soak them before having, though it's a little tedious job, because then you might forget on days to soak and then you miss them. So it's better to roast and keep them on the table so that you can just have them any time of the day you're little hungry. But if it doesn't suit, you must soak. I think Parul will need to wrap up because अभी भी मुझे लगता है कि I can continue talking with you. It's such an interactive Just session. last one question. I'm Yeah. sorry. Last question I had on my list. Okay, There's okay. another question that a lot of people, or myths, I don't know what it is, that after pregnancy, PCOD may be gone. You might cure PCOD after pregnancy. Is that true? I think अभी जब से I started the lecture and I've been keep on saying again and again the same word: lifestyle disorder, lifestyle disorder, lifestyle disorder. जब तक lifestyle ठीक नहीं होगा PCOD नहीं जा रहा, because PCOD तो आपको है ही नहीं. It's not a disease, it is a syndrome. वो आप जब भी अपनी वापस उन क्या कहूँ मैं आदतों पे जाएंगे कि Exactly. आपसे Bad lifestyle. हाँ. बैड हैबिट्स पे जाएंगे वापस, वो दोबारा वापस आ जाएगा. एंड Just the यू way we talk about weight. People या say ना कि हमने weight तो कम कर लिया, अब ये तो वापस आ जाएगा. तो it is the same thing. आप ये सोचो कि मैं वापस से पुरानी आदतों पे चले जाऊं लेकिन मेरा weight उतना ही रहे. Not possible. Same is with PCOD, I think. So they have to have a healthy lifestyle throughout their life, and it's not only for PCOS patient, it's for normal people also. अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सर्दियां हैं और मैं स्वेटर्स डाल रही हूँ और मैं कुछ भी खाती रहूंगी and I expect myself to be slim and thin in summers, it's not going to work. It's not going to work. Right. So Right. So true. Right. So I I think think we have already exceeded our time, but thank you so much. It was such an interactive talk. मैं तो सोच रही हूँ पारुल कि अभी मैं next session भी आपके साथ में बहुत जल्दी let's plan do करें. it. Why not? Why Yeah, not? Let's do it again. it was such a fun. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Gunjan. Thank you.